यस फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में टॉपिक डिफरेंशिएशन के कुछ टॉपिक्स हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। मैं टॉपिक वाइज पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उस पर बेस्ड हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में ये टॉपिक डिस्कस किया था, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टॉपिक फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। हियर sin x raised to power y and sin y raised to power x, तो ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन वाली कंडीशन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो, टेकिंग log both the side like this, log sin x raised to power y, it is y। भाई थोड़ा सा बोर्ड में ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है। एंड इट इज log sin y raised to power x, as we know log m raised to power n jump in front of log, same here, so we have y log sin x is equal to x log sin y, and as we know all logarithmic functions in differentiation must be base e. Here base e, is that clear? Now it is product rule u into v and function in function chain rule also. We apply product rule first, then chain rule like this. Y as it is, differentiation of log sin x base e and plus log sin x as it is, differentiation y. Similarly in RHS, x as it is, differentiation of log sin y plus log sin y as it is, differentiation of x. Now differentiate it, it is y into 1 upon sin x into function in function chain rule cos x. Is it clear? It is clear. Now plus log sin x as it is and dy by dx. इसका ऐसे कैसे रहेगा? Now here x as it is 1 upon sin y into cos y। अब ये y टर्म है, यहां थोड़ा सा आपने को जो है लर्न रखना है, dy by dx also, because we are taking differentiation with respect to x and it is y term, and here differentiation of x 1, so log sin y as it is. Yes, it is without dy by dx term, it is also without dy by dx term, so we can separate them। इसको तो ट्रांसफर कर देता हूं या उसको इधर ट्रांसफर कर दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जो dy by dx टर्म है इसको हमारे को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन वी हैव इट इज log sin x माइनस ये वाली टर्म उधर जाएगी, यस, बाय द ट्रांसपोजिशन cos अपॉन sin cot y and here x also, it is x and dy by dx common, dy by dx common,
and here log sin y as it is, and by the transposition minus y cot x. Is that clear? If we transfer this term in denominator this, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा dy by dx is equal to this term upon this term. Is that clear? तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है. चलो एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं ऐसा ही. ओके, इसमें फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो, कहीं कोई स्टेप में कुछ डाउट चल रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स. ओके, वी आर टेकिंग अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक x raised to power y into y raised to power x is equal to a raised to power b. चलो इजीली सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग log both the side like this, log x raised to power y raised to power x is equal to log a raised to power b base e. Clear? Now applying logarithmic properties like this, log x raised to power y plus log y raised to power x, and here log a raised to power b. Now we can convert it y log x plus x log y, and here b log a. Now differentiating respect to x, okay, it is u into v, product rule. So y as it is, differentiation of log x 1 upon x, plus log x as it is, differentiation of y dy by dx. भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना सॉल्व. आई थिंक इट इज क्लियर. प्लस नाउ हियर x 1 upon y dy by dx, differentiation of log y, and differentiation of x 1, so we get only log y base e. And here this is total constant term, so differentiation of constant term will be 0. Okay, now it is without dy by dx term, it is also without dy by dx term, so we can separate them without dy by dx term and dy by dx term. These are dy by dx term, so taking common dy by dx like this, log x plus x upon y, and taking dy by dx common, and here minus y by x plus log y base e. We divide this term by this, then we get dy by dx is equal to minus y by x plus log y upon log x plus x upon y. You can take LCM in numerator and denominator also, like this, y by x with minus sign, and here y plus x log y, and here y log x. Is that clear? Simple example. Yes. Okay, we are taking one of the most important question like this, x raised to power y plus y raised to power x is equal to a raised to power b. बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था वहां प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म था,
यहां बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाए, वी कांट टेक लॉग बोथ द साइड इन दिस कंडीशन. आई रिपीट, वी कांट टेक लॉग बोथ द साइड इन दिस कंडीशन. लॉग नहीं लेना है. इज दैट क्लियर? सो we these terms separately like this. Let u is equal to x to the power y and v is equal to y to the power x. ये हमने दो अनदर वेरिएबल अपन ने सपोज कर लिया, अज्यूम किए. इज दैट क्लियर? यस. नाउ वी कैन टेक log both the side in this term and is in this term also. Okay? Yes. Taking log, so log u is equal to log x to the power y log u is equal to y log x. Here base e, it is self understood. And now differentiating with respect to x. Here 1 upon u du by dx, because u is a variable, not a constant. So we are doing differentiation with respect to x of u. Here y as it is 1 upon x log x as it is, differentiation of y dy by dx. So du by dx is equal to u y by x plus log x into dy by dx. We can put value of u x raised to power y. So we can put value of u x raised to power y. So x raised to power y y by x plus log x into dy by dx. Okay, then it is equal to du by dx. Similarly, we can calculate this portion also, like taking log v base e log y raised to power x. Log v is equal to x log y base e. Differentiating with respect to x, it is 1 upon v dv by dx, and it is x 1 upon y dy by dx, and log y base e. So dv by dx, v को ट्रांसफर कर रहा हूं मैं और वैल्यू भी पुट कर रहा हूं. y raised to power x x upon y dy by dx plus log y base e. Clear? Now it is dv by dx and it is du by dx. Here u plus v is equal to a raised to power b. Then differentiation of this du upon dx plus dv upon dx is equal to 0. Now put the value of du by dx from here and dv by dx from here. ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर लेंगे आप लोग. फिर वही पुराना पैटर्न अपने पास है, सेपरेट without dy by dx term and dy by dx term. Then we get our answer. Okay, then like this. If we put values of du by dx and dv by dx, then we get from here x to the power y by x plus
log x into dy by dx plus dv by dx here y raised to power x upon y dy by dx plus log y. Solve the bracket first and it is equal to 0. Now solve the brackets. We can multiply them and now we have y x to the power y minus 1. बेटा यहां y x टर्म है, ऊपर जाकर पावर क्या जाएगी नेगेटिव. So it is a x term and it is x term also. We can calculate it. So it is x raised to power y minus 1 and here x to the power y log x dy by dx plus here also x y raised to power x minus 1 dy by dx plus y raised to power x log y is equal to 0. Now this is without dy by dx term and it is also without dy by dx term. इन दोनों सेपरेट कर लेंगे, इन दोनों सेपरेट कर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे. क्लियर? ओके देन. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए. बुक नेम, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए. आपके डाउट्स का नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. ओके, थैंक यू.